Why did some states need a constitutional amendment? अब देखो जैसे जब तेलंगाना बना था as a state, there was no constitutional amendment that was needed. And most aspirants can answer this question. But some states did require a constitutional amendment. And let's just figure out कि ऐसा क्यों है कि थोड़े स्टेट्स को चाहिए था थोड़े स्टेट्स को नहीं चाहिए था. पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे है. ये क्वेश्चन आया था 2025 में. You can pause the video here and try and attempt it. I hope you've attempted it. If you just look at this question and its answer is all three are correct. इसमें second statement देखो आप. In Nagaland, the state came into existence on the basis of a constitutional amendment act. In general, you would assume that this is not possible because all of us read the basic books and we know that states जब बनाते हैं तो उसके लिए constitutional amendment act की जरूरत नहीं होती. Ordinary parliamentary law से हो जाता है. But there are exceptions. And that is what we're learning over here. Now first the basics, if you're unaware, ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि Article 2 deals with admission or establishment of new states. Article 3 with generally internal बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें existing states को reorganize करने के लिए, नया state बनाने के लिए, boundaries change करने के लिए ये article use करते हैं. And Article 4 makes it very very clear that laws made under Article 2 and 3 will not be treated as a constitutional amendment under Article 368. इसके बावजूद, despite this, there are cases where constitutional amendment acts have been needed. Now, let's figure that part out. Look at these four states: Nagaland, Sikkim, Mizoram, and Arunachal Pradesh. These states needed a constitutional amendment, and these quirks, ये जो अलग चीजें हैं, इन्हीं से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे वो क्वेश्चन जैसे कि उसका सेकंड स्टेटमेंट आंसर भी हो जाता. नागालैंड के केस में वेरी स्पेसिफिकली their main issue was that there was insurgency, there were ethnic conflicts, and there were many different kinds of issues happening over there. The Indian government negotiated with the people over there, and that is how they had to prepare specific or special exemptions जिसके लिए एक अमेंडमेंट जरूरी था. इससे बना आर्टिकल 371 एंड दिस गारंटीड दैट जो नागा कस्टमरी लॉ है that will be protected, religious and social practices will be protected, ownership of land and resources will be protected, which means that in अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, then if this law affects any of these things in Nagaland, then that law also needs the explicit vote of the Nagaland Legislative Assembly, which has to accept it. तब जाके ये चीजें अप्लाई होंगे नागालैंड में, वरना नहीं होंगे. ये इस 371A प्रोविजन से हमको मिलता है. इसके लिए there was a requirement of a constitutional amendment act. As far as मिजोरम goes, similar issues थे and similar protections दिए गए हैं. उनको आर्टिकल 371G दिया and the 53rd constitutional amendment act gave us मिजोरम. अरुणाचल प्रदेश के केस में आप जानते ही हैं कि जो अगर आप मैप देखेंगे तो नेबर्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं. इनफैक्ट our neighbor over there, that is China, has the audacity to say that this is southern or lower Tibet. इसलिए मैं उनको जनरली वेस्टर्न तिब्बत कहता हूँ, चाइना को, बट जाने दो. द पॉइंट इज when they create issues over there, we had to ensure that we also had special protections in Arunachal Pradesh when it was being made into a state. उसके लिए गवर्नमेंट को काफी सारा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है वहां पे रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर.
पीस के लिए वहां पे। ये हमको 371 H में मिलता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को भी बनाते समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा। लास्टली इज द केस ऑफ सिक्किम। नाउ सिक्किम की खास बात यह है दैट सिक्किम वाज ओरिजिनली नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट वाज अ प्रिंसली स्टेट एंड दे हैड देयर ओन मोनार्की, चोग्यल कहते थे। The people were not happy with the monarchy. They wanted a democracy. So they created for democracy, काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे एंड देन फाइनली उनका खुद का पार्लियामेंट भी बना था एक। उनके पार्लियामेंट के रिक्वेस्ट के बाद पहले हमने एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। इसमें हमने उनको स्टेटस दिया एक एसोसिएट स्टेट का। एसोसिएट स्टेट का ये मतलब था दैट दे कैन एसोसिएट themselves टू इंडिया, we'll take care of their defense and external affairs and all of that, and they'll basically manage their own internal affairs। ये हुआ था 1974 में। 1975 में, सिंस ये जो 35th अमेंडमेंट था ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, 36 में हमने उनको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया एंड दे बिकेम अ प्रॉपर स्टेट ऑफ इंडिया, not and no longer they were no longer an associate state। This concept of an associate state was never there in the constitution originally, which is why an amendment was required। Now, apart from this, I'm sure you know of cases जहाँ पे cessation of territory जब होता है, जैसे कि जब enclaves या slaves के exchange होता है, तब भी एक constitutional amendment जरूरत होता है। But that is not for getting a state, that is for giving away the territory। And thank you। I hope you know a little bit more about Indian polity now। If you like this video, please like, share, subscribe so that we can make more such content for you and you can actually watch it। Thank you।